Hey, hi everyone. Sorry, I got delayed by a minute. मेरे को ऐसा लगा था कि मैं ऑलरेडी लाइव आ चुका हूँ, जबकि ऐसा था नहीं. So I guess now I'm live. Uh, yeah. So like as of now, we'll wait for a minute or two. Maybe some other people will join from there. And अगर किसी को स्टेज ज्वाइन करना है, लाइक हर बार की तरह, सो लिंक जो है वो मैंने कमेंट्स में लाइक डिस्क्रिप्शन में भी है एंड देन लिंक आपका लाइव चैट में भी है. सो अगर आप वहाँ से ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम देयर आल्सो. सो आज मेजरली हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, where the market has fallen, like somewhere around Nifty has fallen 12 to 13%, and then they the mid cap आपका जो Nifty 100 है, mid cap 100 index है, that has fallen approximately somewhere around uh, I would say somewhere around like 18 or 19% it has fallen, or just small cap index है वो more than 20% it has fallen. So as of now, I can see four people are there, and if someone wants to join the stage, they can just click on the link in the description. From there, they can join, or I have given the same link in the chat box also, so they can join it from there also. Uh, and जो भी लोग देख रहे हैं, it will be really helpful if they can like or maybe comment also, so it will be reaching to more people out there. So that would be really helpful to us. So आज as I discussed, like कि जो हम majorly बात करने वाले हैं, like the index has fallen this much, and जो individual stocks हैं in the portfolios, they could have fallen more than that, somewhere around 25%, 30%, they have fallen out there. So what has happened in this scenario, and why, like what could be the up the next, अगर the cycle, it's more of a cycle में आप कहाँ पर थे and क्या थे, and what could be the signals जब आप next cycle में होंगे. So this is what something I just thought of discussing, कि अगर आप एक बार चेक करेंगे, ऑल्दो दीज अदर पॉइंट जो आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा, लाइक इफ आई आप देखोगे तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको विजिबल तो हमेशा ही रहेंगे मार्केट में, बट इट्स मोर ऑफ कि जब बुल मार्केट चल रहा होता है, सो इट्स लाइक क्या तेजी में किसी को दिखता नहीं है, इट्स लाइक पैसा आ रहा है, सो पीपल आर मोर ऑफ लाइक let it come. So that is how the tendency is, and then we forget about a lot of things कि भाई क्या है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, and what are the uh, सच में जो हमारे स्टॉक्स हैं, क्या वो लाइक सही वैल्यूएशन पर अवेलेबल थे या नहीं थे, ऑल दोज थिंग्स, लाइक या फिर हैं या नहीं है, वी जस्ट टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स जो कि हम देखते हैं. So yeah, so that's what I just thought कि I'll just take a minute and then discuss it. Yeah, thanks a lot everyone for liking. Again, अगर किसी को स्टेज ज्वाइन करना है सो दे कैन ज्वाइन फ्रॉम द कमेंट्स. लिंक जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है वहाँ से कर सकते हैं. मैंने सेम लिंक आपका लाइव चैट वाले बॉक्स में भी दे दिया है, लाइक आई हैव गिवन. सो ओके, सो अगर आप जो करंट फॉल देखोगे, सो लाइक आई हैड सम ऑफ द स्टॉक्स लाइक जहाँ जो विच वर लाइक, एक तो अर्निंग्स जो आपके थे दे लाइक जो प्रोजेक्टेड अर्निंग्स थे हमारे, वहाँ से उनके प्रोजेक्टेड अर्निंग्स कम हुए, इट्स लाइक मोर ऑफ अर्निंग्स डाउनग्रेड हुआ. द सेकंड थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट मोर ऑफ आपके जो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के बारे में बात करें. ऑल्दो लार्ज कैप में भी जो कुछ जो यूनिवर्स है उसमें भी ऐसा नहीं है कि सबके अर्निंग्स बढ़ रहे होंगे, वहाँ पे भी अर्निंग्स डाउनग्रेड आए. बट द की पॉइंट इज लाइक
जो आपका मिड कैप इंडेक्स है, that was like approximately trading 50% higher in the valuations, अगर आप देखोगे as compared to the निफ्टी. नाउ अभी कोई बोल सकता है भाई कि उसमें इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे स्टॉक हैं, बट एक क्यूमुलेटिवली अगर आपको सेंस लेना होगा, सो जो निफ्टी 50 का मेरा वैल्यूएशंस था, there was somewhere approximately around 25 26 तक मेरे, if you go back and check, जो निफ्टी का it has reached the Nifty's peak. And then the mid cap index जो था, that reached somewhere around 50% higher, which means like approximately 40 के multiple पे mid cap index आपका चला गया होगा. So that is how one of the it's a, you can say, one of the indication that you can take it from there, like it is one of the indication जो कि वहाँ पर we all got, like कि this can be like अगर आप next cycle में whatever has happened in this cycle, maybe most of us were not able to get that this is going to come, although there was a lot of chatter and all, but again I would say कि जब चल रहा होता है, so no one will be like okay ये हो नहीं सकता वैसा करके. So that is something like अगर 50% higher valuation पे चल रहा है, so that is one indication. अगर आप देखेंगे कि जो index का comparison है आप कर सकते हैं historically, it happened somewhere around 2018 also, जब आपका mid cap index was trading at this premium विद आपके जो निफ्टी के साथ, निफ्टी 50 आपका जो लार्ज कैप इंडेक्स है उसके साथ, एंड देन द इंडेक्स itself corrected somewhere around 30-35% index corrected. When the index corrected, like this data will be available to you at अगर आप स्क्रीनर पे जाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपके साथ ये डेटा अवेलेबल होगा. सो आप वहाँ से भी you can just verify this data or there from also. So 50% के आपके वैल्यूएशन पे चला गया था, एंड दिस हैज हैपेंड इन 2018 आल्सो, जहाँ पर उसके बाद जो आपका इंडेक्स है दैट करेक्टेड, आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन द मिड कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं आपके, जो इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स है दैट करेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% it got corrected, right? And some of the individual stocks that corrected much more from there. अगर आप देखोगे तो so it will be like somewhere the stocks जो होंगे आपके more than 50% भी correct हुए, 40% 50% correct हुए, which has happened at this time also. Like we have corrected approximately 20% we have corrected in the mid cap index, small cap index में और भी थोड़ा ज़्यादा होंगे. So अगर आप देखेंगे यहाँ से जाकर, लाइक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड अगर आप चेक करना चाहेंगे, मेरे को अगर लगता है कि दिस इज लाइक अगर हम हिस्टोरिकली देखें, सो वी हैव करेक्टेड, एंड if there's a further correction possible, बिल्कुल possible, there's a further correction is possible, but the major thing that can happen जो मेरे को लगता है it's like यहाँ से करेक्शन आपका लिमिटेड होगा मे बी. अगर आपका स्टॉक 40% गिर गया है या 50% गिर गया, अगेन इट कैन डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल स्टॉक्स, नॉट ऑल द स्टॉक्स विल कम बैक, दैट्स आल्सो थिंग. तो सारे स्टॉक्स हो सकते हैं वापस ना आए आपके. सम ऑफ द स्टॉक्स विल बी लाइक कि आपका कुछ स्टॉक्स मान लो आपके रेलवेज के स्टॉक्स हैं, वेयर आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और द रेलवे टीम, बट माई पॉइंट इज the way they used to trade at the multiple and they reached the multiple, now there's a high chances that maybe their earnings will grow but the multiples can correct themselves. So that can be a reason out there. Apart from that, हो सकता है कुछ PSU stock, although the railways are also PSU, right? So there can be there that uh, the second reason जो मेरे को लगता है, और the indication which आप कह सकते हैं जो मेरे को लगता है, most of the time the participation from the individual investors, that the participation was like humongous participation. आपको like that's particular saying, like a lot of people say कि जब आपके आसपास वाला हर कोई, whenever everyone starts talking about the stocks, you get a sense कि like अब तो there cannot be more, the market, there's the peak somewhere near, like. So I'm not sure, but everyone and most of the people whom I was interacting with, and that can be like on someone's personal experience, अगर आपने खुद भी experience किया होगा, so people
who are doing 9 to 5, like some of the teachers out there I met. They went to the primary schools and all, and they started opening their demat accounts. They started applying to IPOs and started watching the TV, and then started buying the shares. A lot of people who are doing different jobs, they started doing that. And people are like, there was a sense of proud that we are buying the stocks. And there's nothing wrong in having a sense. Obviously आप कोई asset buy कर रहे हो, so you will be feeling proud. Like when I go and buy a property, I feel a moment of proud for me. But there's a big difference between property and the stocks. The point is, the stocks can go down further, while most of the time the property prices don't. At least in India, they don't go down from there. So there was an excessive participation. Uh, the valuations were excessive. The third point, which I noticed in this through the cycle, and maybe, as I already told, we can, if we keep it in mind, we can use it next time uh, to benefit. Howsoever we gonna use it, like maybe by rebalancing our positions, or by whatever you want to use, shifting or reshuffling your portfolio. So the third point that I noticed was it was the earnings started getting downgraded. So a lot of when participation was very excessive, and the earnings started getting downgraded. That has happened, but that was like, ये तो आपका लास्ट क्वार्टर से स्टार्ट हो गया होगा, लाइक सितंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स इट हैज स्टार्टेड, कि आपके सितंबर क्वार्टर के अर्निंग्स भी कंपनीज के अच्छे नहीं आए थे. एंड देन सम ऑफ द सीईओज, लाइक एशियन पेंट सीईओज एंड ऑल, दे सेड कि भाई there's some issue with the and with the economy itself, they said. And then later on he has had to apologize. And then we had our microfinance issues out there. So all those things were there. So आपके uh, the तीन फैक्टर जो मैंने अभी तक बोले हैं, वो है कि आपका excessive valuations. The mid cap was small cap index was trading at least 50% higher valuation. Excessive participation from the individuals, which can vary from the individual's interaction. Because जब भी मैं लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों के बीच in the sense when I meet the family and friends, most of the time they want to talk about the market, at least. So because they know ki this person is only good about talking about one thing. Like I'm not saying I'm good about the markets, but talking about the markets, maybe they feel good about it. So that is how it is. The third thing, earning downgrades getting it started. And the fourth thing was like, जो हम सबने देखा होगा, there was like so many IPOs, so many IPOs, and so many of like जो promoters say they were offloading their stakes like through QIPs and all. And the best part was, आप सबने देखा होगा, जो यामा के शोरूम, दिल्ली में 2 शोरूम थे, जो लाइक 8 crores के ये 8 crore से 10 crores का कैपिटल रेज करने के लिए आया. द पर्सन केम, wanted to raise some 8 to 10 crores, and he got some bits of approximately 4,000 crores. Like, so this was like आपका एक्सेसिव है, वो चीज़ें जो हैं आपकी, कि अगर आपके एक्सेसिव आईपीओज वगैरह आ रहे हैं प्राइमरी मार्केट, जो आपकी डील्स हैं, एंड पीपल आर ट्राइंग टू offload their stake, like the promoters and all. So these are the 4 things जो मैंने आपको जो which I noticed, like maybe we could have had seen that. And then this we could have seen that, and maybe we could have got alerted and just reshuffled our portfolios. But it's a totally, like when you are in that particular madness, or when I would say, like when you have made like some of, if someone would have invested in those PSU stocks, or in those railway stocks, the people would have made a good amount of money out there. And at the time, I guess hardly anyone wants to listen to any other person. So that is something which happens there. uh, Apart from that, just yeah. So I just give this data here. So what has happened from December, this data I have taken like from the last mid cap index cycle. Mid cap was, which like 2018 में जो fall था, if just try to compare it with the current situation. So I'll just give you this data.
दिसंबर 2016 से लेकर जनवरी 2018 तक हमारा जो निफ्टी मिड कैप है, that rose approximately 51%, and Nifty small cap index, which rose approximately 65.7%. So this happened between December 2016 to January 2018, which is like within a year, the index itself gave 50, 60, 70% return. So just imagine like how much the individual stocks would have gone up during the same time. And that is the point where just which I was talking about the 2018 cycle. That is the point where there was a lot of froth which came in the a lot of froth which came out there, and then from January 2018 till August 2019, which is like in a span of 8 months itself, the index mid cap index that corrected 30%, and a small cap index which corrected 45% of there. So no, there was a like huge pain out there कि अगर किसी ने वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो उस हिसाब से नहीं किया होगा, एंड द साइंस which I'm talking about which are like approximately the सेम साइन आउट देयर, लाइक कि वहाँ पर जो भी आपके साइन हैं वो सेम है, एंड आप कह सकते हैं उसको लाइक कि देयर वाज उस टाइम पर अगर आप देखेंगे जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड 2017 एंड ऑल दोस थिंग्स, बट वो सारी की सारी चीज़ें आपको 2018 के जनवरी के से end से पता चल रही है. सो दोज आर लाइक सेम एज ऑफ नाउ इन. Someone wants to join, just give me a second. Jitendra. Hey, hi Jitendra. Hello, can you hear me? Hi, hi Hey, hi. Amit. How? I'm good. How are you? Yes, yes, I can hear you. Am I audible? Yeah, you are. Uh, Tell me, how's your weekend going? What's the question? yeah. Okay, I have two questions. Uh, Yeah, go ahead. okay, and now as we see the Nifty is falling or somewhere around 10 to 11% from the peak, or maybe 15%. So I'm thinking as FIs are taking out the money from the Nifty, but where are they investing now? Is there any other lucrative market available for FIs? Okay, so yeah, I'm not very sure to be honest, because I don't track much of the markets out of India. Uh, but what I heard is like China is one of them, because China was beaten down out there from a long time. China's index or China's market didn't give any returns, and one of the reason was like people were not ready to believe in China's government. One of the reason was that, and there was like इंडिया में अगर हमारे जो स्टॉक्स हैं, if they grow it like 20-25%, and it's like they are asset light model पर हैं, asset light in the sense which are like tech stocks जो हमारे प्लेटफॉर्म वगैरह हैं वहाँ पर हमारे स्टॉक्स जो हैं वो. सो अगर वो हमारे अगर 20-25% पे ग्रो करते हैं, सो दे आर लाइक वेरी रिचली वैल्यूड. आप अगर देखोगे तो जाके 70, 80, 90, 100 और मे बी मोर देन 100 भी हम देने को तैयार रहते हैं बहुत आराम से मल्टीपल. वही चाइना में अगर आप जो देखोगे टेंसेंट वगैरह जो है वहाँ पे गेमिंग कंपनी जो थी वहाँ की, और अलीबाबा का भी आई हर्ड लाइक वहाँ पर जो है टेंसेंट अलीबाबा एंड देन अदर जो हैं, ऑल्दो मैंने कभी ऐसे खुद से ओपन करके नहीं देखा वहाँ पे. एंड सो वो दे वर ट्रेडिंग एट मे बी 8 और 10 के मल्टीपल पर दे वर ट्रेडिंग आउट देयर, दे वर लाइक दैट. Yeah, so that is how maybe something would have happened. Even I was listening to someone on YouTube, like some fund manager, and हमारे यहाँ पे आप देखोगे जो there's a watch retailer, luxury watch retailer जो हमारे यहाँ listed है. So that is getting some multiple of 60 और 70 का multiple उसको मिल रहा है. While I heard like हांगकांग में एक luxury watch retailer listed है which is like mainly dealing into Rolex,
and that trade about maybe 8 or 10k multiple पे trade करता है, and that has got a dividend yield of more than 18%. While जो हमारे यहाँ है, so obviously Indian market was like costly out there. So maybe, and then there was like आपका यूएस obviously is a bigger market, वहाँ पर जा रहे होंगे, and the reason being is like अ, अभी आपका देखो आप नास्डेक वगैरह में तो अभी भी मेरे को लगता है दे आर लाइक मेकिंग ऑल टाइम हाईज, लाइक 20,000 था लास्ट वीक, सो दैट वाज आई बिलीव द ऑल टाइम हाई नास्डेक मेड लास्ट वीक. Like Friday they have corrected around 2%, but I was उसके पहले तो they made all time high there. So that's also a good market to be. And अब देखो हमारा जो मेटा वगैरह है at that size, like they are like 1.5 1 trillion, more than $1 trillion की कंपनी बन चुके हैं वो. It's like इंडिया के जीडीपी का 25%, so their market cap is more than $1 trillion, and still they are growing at like 10-15%, which is like such a asset light model. You just don't have to do anything out there. People will join, people will share, you will get ad revenue from ads, all that, those things. So वो कंपनीज अभी भी आप देखो कि मेरे को नहीं लगता कि बहुत उनका एक वो मल्टीपल देखना, दे वोंट बी, आई डोंट थिंक कि दे आर लाइक मोर देन 25-30 से ज़्यादा पे वो अभी भी चल रहे होंगे मेटा वगैरह तो. सो दैट इज हाउ, बट इट्स मोर ऑफ जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं तो आपको यही चीज़ अच्छी लगने लगती है यहाँ पे इंडिया में. लेकिन इट इज़ लाइक ऐसा नहीं है कि उनकी भी कोई गलती है. या श्योर, गो अहेड. और एक्चुअली माय आइडिया इज कि एक आपकी आवाज़ बहुत इंडिविजुअल स्लो आ रही है यार. आपकी आवाज़ बहुत अब स्लो आ ठीक रही है। है. हाँ, बेटर एक्चुअली नाउ. अगर एक्चुअली मुझे नॉट तो ऑडिबल. आपकी आवाज़ बिल्कुल रिपीटेड सुनाई दे रही है। हाँ, ठीक है। Actually, I'm thinking if they are investing somewhere, some other market, so once that is overvalued, or all the people, other people, their own market people, they investing. So definitely, and our market is corrected so much, the FIs will return to our market, and again it will be, we will see the rise of Nifty. So कभी ना कभी तो हो गई ऐसे. I think we can also, we can track these kind of market like China or US if they are the major contributor. हाँ, कर सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं. इट्स मोर ऑफ लाइक कि आप कितने जगह करना चाहते हो, एंड यू कैन track the commodities also, like what are the signs did we see before the gold making a new high. If you can make that, and I'm not sure if we are allowed to trade in gold derivatives, because how much big position we are going to take, it's easier, as per me, is like if I'm going to take a tactical position which is like for a few months only, so I can go start with the derivatives and then convert it to the delivery if it's a longer term there. So that can also be there, but yeah, if you are an individual investor, again those things can be tough for one person, because now आप ऐसा भी देख सकते हैं. मेरे को what I heard is like Pakistani market, Pakistani stock exchange, like Karachi Stock Exchange, I believe it's the name is, main जैसे like हमारे यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE है करके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, so there is Karachi Stock Exchange. So Pakistan's market has done better than us in last year or something like that. बट अब आप ऐसे बोलोगे मैं, आप कितने मार्केट ट्रैक कर सकते हो. इट्स जस्ट सेइंग फॉर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इट कुड बी टफ. If you are having a team, I'm not sure how many people's team, if you can have like maybe 4, 5, 6, 7, 8 or 10 good people with you, or then it could be easier, kind of. Okay, Amit, do you have any idea how an individual can rotate its capital in different sectors? How to analyze which sector is going to give you a good return? Or यार देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, लाइक व्हाटएवर स्मॉल एक्सपीरियंस आई हैव, हमेशा ऐसा सेक्टर ही चलने वाला होगा, चलेगा. इन द सेंस अभी आपके रेलवेज, जैसे मैंने अभी बोला भी पीछे में, रेलवेज, पीएसयूज, ये चल गए हैं आपके, राइट. सो अगर ये आप सोचो कि हमारा जो बुल मार्केट है वो थोड़ी देर के लिए पॉज हुआ है, करेक्शन आया लाइक 20%, 25%, 30% का जो भी करेक्शन आया होगा, अकॉर्डिंग टू मी नाउ
the or every stock will fall approximately 40% to 30-40%. जब इंडेक्स ही गिर गए हैं like 20-25%, एंड अगर almost देश I think या अगर यहाँ से 10-15% हमारा इंडेक्स और गिरता है, so every stock would have fallen like 30%. मैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, नॉट द लार्ज कैप ones. There are like hardly 100 large cap stocks, अगर आपने वही सारे ले रखे हैं तो it's a different thing. So आपके सारे के सारे अगर वो स्टॉक्स भी गिरेंगे सारे, बट then again this theme will not come back. This theme should not come back यहाँ से, क्योंकि मेरे ख्याल में जो नेक्स्ट सेक्टर वो चलेगा जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं होगा, दैट विल बी अंडर ओन्ड, जहाँ पे जाके हर फंड मैनेजर ने बोल दिया होगा लाइक कि हमने अंडर ओन है हम, जिसमें अर्निंग्स आपके एकदम से चलना बंद हो गए होंगे। देयर विल बी सम, अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा कि भाई नहीं ये तो चल ही नहीं सकता, लाइक, एंड देन suddenly there will be some trigger will come, like uh, in my short experience, I will take like 6-7 years of experience, I would say I've seen that 2-3 times. Once I was like, I was right in identifying the particular sector that was these new age companies. After the IPOs, their IPOs came after COVID, like 2020, after their 21 and 22, somewhere their IPO came, they made all-time highs. And then they started, like Zomato made, would have made 160, 170 high, and then it just started coming down. And I believe it came down to 40 rupees. And the same was like with PB Fintech, Paytm, and then car trade. Everything would have been like that. And then I was like, no one was ready to touch these companies. These companies were like under owned heavily, like हर एक को ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ से चल ही नहीं सकता, like अगर मैंने इसमें लगाया, and that the valuations itself, अगर किसी ने, and they were loss making companies also. बट अगर कोई जाकर उसके, आई बिलीव अगर किसी ने जाकर उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट्स उस टाइम देखे होते हैं, विच लाइक fortunately I and some people in my team which helped me, like I would, like one of the person was Vishwendu there, he helped me out there, and we were like, if we go wrong, like we may lose some money, but if we go right, uh, that maybe that we can make a good amount of money from there. So we batted on those companies that time. It was like somewhere around January 2023, and uh, like next 1.5 year, the company, most of them apart from this Paytm, got approximately 3 or 4x when they Paytm got some issues which was like more of regulatory issues वगैरह, otherwise it also could have done good. That's what happened. And as of now, I believe, अगर आप 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले की कमेंट्री जाकर देखोगे, so what I believe is, everyone was talking about consumption slowdown, and most of the fund managers went underweight in these discretionary, consumer discretionary, and some of these stocks, I believe, like now the trigger for the earnings could be this tax cuts, and then the further monetary policy, maybe हमारा जो RBI rate cuts करेगा, so that can be a trigger where these companies can have good earnings from there. So I believe maybe I may be wrong again, but there are very less chances if you bet selectively, and it can be again a bottom up approach. Not every company will give you good returns from there. Some companies which may be like अभी से वो आपको अगर 150-200 के मल्टीपल पे मिल रहे हैं, so even if the earnings come there, it won't make much of the sense, like 70-80 का मल्टीपल हो जाएगा उनका. बट अगर आप कुछ कंपनीज में भी, आई एम नॉट श्योर इफ सम ऑफ द बल्क ऑफ द कंपनी आपको देखने पड़ेंगे, दैट एफर्ट यू हैव वन हैज टू पुट, that person has to look at the some 50, 60, 78 companies from there, and then बॉटम अप में मे बी इफ ही विल फाइंड आउट ऑफ 70-80 कंपनीज, अगर आपको वहां से 5-6-7 कंपनी ऐसे मिलते हैं जिनके अर्निंग्स इस क्वार्टर में बहुत ही खराब होंगे, दिसंबर क्वार्टर में, बट अगर आप, यू कैन गेट अ आइडिया कि यहाँ से अच्छा कर सकते हैं, इन द सेंस लाइक बेस्ड ऑन देयर बिजनेस मॉडल और बेस्ड देयर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, बेस्ड देयर कंपनीज मार्केट लीडरशिप, ऑल दोस क्राइटेरिया आप एक बार वहाँ पे देखेंगे, सो व्हाट कैन बी इम्प्रूव. सो आई बिलीव दिसंबर क्वार्टर जो हमारा अभी गया है, बेस इन कंज्यूमर कंपनीज के लिए काफ़ी लो सेटअप हुआ है, और जो इस साल का 2025 का दिसंबर आएगा, दैट कैन बी
that can be very good. That's what my assumption is. Then the margins will improve, the revenues will improve, and if the god is great, and if the market is rewards them with a higher multiple, so the good money can be made from there. That's what my assumption is. Yeah. Hello. Yes. Yeah, I hope I answered your question. Yeah, yeah. Thank Yeah. you for your time. Yeah, I'll also One more share, thing like, that yeah, go I ahead, go ahead. yeah, yeah, okay. So over the period for if you take last 20 years, Nifty provided somewhere around 10 to 15 years of CAGR. So Hmm. we have already from 8, 9,000 to now we are around 22, 23,000. So can we expect same rate if we invest for long period of time, like more than 10, 15 years? Okay, so I'll tell, like, the NSE came into existence somewhere around 95, 96 after the Harshad Mehta scam happened and all those things happened. So I just telling a short history. So the people thought that there should be a better mechanism to do all those things. So there used to be a lot of small exchanges, and जो भी आपके रीजनल लेवल पर होते थे, जैसे हमारा दिल्ली में है डीएसई, जो आपको मिलेगा लाल किले के पास में, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज हमारा यूपी का कानपुर में होता था। एंड कलकत्ता में तो बहुत बड़ा एक्सचेंज था, जो कलकत्ता वाला तो बहुत रिसेंटली तक चला है, वो अब जाके शायद क्लोजर के लिए आया, उसका कुछ केस वगैरह का अभी भी पेंडिंग है। सो दैट इज समथिंग जस्ट वांटेड टू टेल। सो 95 96 में जो हमारा बेस था निफ्टी का, वो 1000 से स्टार्ट हुआ है। ऐसे जनरली मैं तो बता रहा हूँ आपको, 1000 से हमारा बेस है, वो स्टार्ट हुआ है 95 96 में, एंड देन वहाँ से अगर आप लगाओगे, सो 30 इयर्स में हमें 20x रिटर्न्स मिले हैं। सो अगर कोई कैलकुलेट करेगा, मेरे ख्याल में वो दैट शुड कम समवेयर अराउंड आपका 11 to 12% का आना चाहिए, मेरे ख्याल में। आपको अगर 30 इयर्स में हाँ, समवेयर अराउंड 2000, सॉरी, या समवेयर अराउंड, नॉट इवन 12% का नहीं आ रहा आपका। अगर आप आज के मार्केट पे देखोगे तो 11% के अराउंड आपका रिटर्न आ रहा है ओवर द 30 इयर्स। नाउ दिस 11% अगर आप जाके चेक करोगे ना, सो इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देखना आप कितना है। इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 11 to 12% होगा। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन आपका, इन द सेंस, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो आपकी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी अप्रोक्सीमेटली होगी, वो आपकी जो 4 ट्रिलियन है उसमें नॉमिनल भी इंक्लूडेड होता है, इन द सेंस कि आपका जो प्राइस राइज होता है ना चीज़ों पर, अगर कोई कंपनी आज आपको 100 रुपए का बेच रही है, तो कल को वो अगर 101 रुपए का बेचने लगे, तो वो जो 1 रुपए है ना कंपनी की सेल्स में, वो इन्फ्लेशन से आया है। बट ओवरऑल आपका रेवेन्यू में तो कैलकुलेट होता ही है। आप ये नहीं कहते कि भाई 1 रुपए बढ़ा है, वो केवल आपके वॉल्यूम से बढ़ा है या वैल्यू से बढ़ा है, अगर आप जाके देखोगे तो। सो दैट इज कम, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी आपका अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगा, अगर हम सेम जीडीपी ग्रोथ मेंटेन कर पाते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारा मल्टीपल्स ठीक हैं, सो आगे पीछे करके हो सकता है थोड़े सालों में रिटर्न ना आए, थोड़े सालों में रिटर्न ज़्यादा आए। सो 11% का अगर हम मेंटेन करते हैं तो उतना आ जाएगा। अगर नहीं है, सो यहाँ से थोड़ा कम भी हो सकता है आपका। दैट विल ऑल डिपेंड, बट दैट विल मेजरली डिपेंड हाउ एज अ कंट्री वी डू, एंड what where in the direction we are going to, in the sense like जहाँ आजकल हम जा रहे हैं वो तो लाइक एआई वगैरह का टाइम है, एंड ऑल्सो हाउ some of the entrepreneurs will come and how the government will support them, all those things will depend. But can we say like 11%, 10%, 11%, अगर हम 4 या 5% का इन्फ्लेशन लें, 5% इन्फ्लेशन एंड 5% आपका रियल जीडीपी ग्रोथ, सो वी कैन डू 10 to 11% अगेन यहाँ से अगले 30 इयर्स में, विच इज लाइक मे बी 2050 के तक वहाँ से। बट आफ्टर अ पॉइंट मुश्किल होता है करने के लिए, लाइक क्योंकि अभी आप चाइना का देख लो, आफ्टर व्हेन दे हैव रीच्ड $20 ट्रिलियन, सो
अगर आप ग्राफ देखोगे ना, जो प्रोडक्टिविटी का ग्राफ है, वो एक बार के बाद बिना टेक्निकल उसके आएगा नहीं। मे बी आई कैन नेक्स्ट सेशन में मैं वो ग्राफ समवेयर, अगर कहाँ पे ऑप्शन था, आई विल शो दैट ग्राफ ऑल्सो। वो जो ग्राफ है वो फ्लैट होता चला जाएगा, उसके बाद आपको टेक्निकल इनोवेशन ही आगे ले जा सकती है। दैट्स हाउ ओनली द यूएस, जितनी लार्ज इकोनॉमी में यूएस ही आगे बढ़ रही है, बिकॉज यूएस में टेक्निकल इनोवेशन है। नाउ द चाइना हैज ऑल्सो shifted towards mass production से टेक्निकल इनोवेशन की तरफ, सो चाइना कैन डू इट। बट अनटिल अनलेस आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे, एक पॉइंट के बाद मुश्किल होगा। एंड दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे स्टक इन द मिडल इनकम ट्रैप, विच इज लाइक एमआईटी मिडल इनकम ट्रैप में ज़्यादातर कंट्रीज फंस जाते हैं, कि आपकी एक बार जो पर कैपिटा जीडीपी है वो 15,000 $20,000 Correct. हो जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ पाते आप। सो दैट्स हाउ इट इज। And which Again, ways, thank you. Thanks a lot everyone for joining. And I'll also share in video as इस video के we also yeah, know, as per the government policy, they are more focused on the manufacturing. They want to build India is like second China, and China and US, yeah, they are moving to innovation, more with technology. I think technology is something that can provide that good GDP for India. I think yeah, we need to more focus on the innovation on technical. true, very true. So I'll also share the link of my article where I wrote about has the consumer companies bottomed out. I wrote in the last August, I believe it, and still I'm not sure if it's gonna be how it's gonna pan out. So let's see. Thank you, thanks a lot, Jitendra, for joining. Thank you everyone for joining. And आपको आपका जो वीकली वीडियो है वो अराउंड ट्यूसडे को आएगा, आपका शाम में। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, और सबको बोले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, सो दैट हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, एंड वी विल हैव अ बेटर डिस्कशन, बेटर एंड बेटर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। Thank you. Thank